माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, I present the budget for 2023. वेलकम गाइस, अविराज स्टॉक मार्केट में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे आज हम लोग लाइव बजट देखेंगे, सारा लाइव लोकसभा से जहां बजट पेश हो रहा है, और आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का ट्रेड कहां होगा। नीचे आप देख रहे होंगे फ्लैश कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो चल रहे हैं मार्केट में, और ऊपर में आप देख रहे होंगे कि जो फ्लैश कर रहा है कि आज के दिन में हाई जो बना रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमसे चैट बॉक्स पे आकर चैट कीजिए, अदरवाइज बजट आप लोग एंजॉय करें। OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments: unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI, COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life, and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th
to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amrit Kal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amrit Kal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They're generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain.
The components of the scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world.
We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahakar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,560 crores, 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging
collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative. To inculcate financial literacy, financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti, and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities.
an amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed
by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized.
For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad Se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad Se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice,
Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity, DigiLocker, will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crores, including central support of 8,300 crores.
Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles
is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets.
This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A National Financial Information Registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease,
from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आज़ादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit
of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens, and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year,
Marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars, and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap, and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024 31st March shall get the benefit of a lower tax rate
of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agniveer Fund. Personal income tax.
now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees.
We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. One hour, 25 minutes. आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. अभी संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई है, तो अब हम लोग चलते हैं ट्रेड की तरफ. जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ट्रेड कैसा चल रहा है. मार्केट में एक सडनली बाउंस बैक आया है और मार्केट में अब यहाँ से गिरावट होगी, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा. बहुत तेज गिरावट होगा. अगर मार्केट 41,000 को क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी के लेवल में, तो मार्केट में एक सडनली बहुत बड़ी फॉल आएगी. ठीक है, तो 41,000 के आसपास मार्केट को पहुंचने के बाद एक शार्प सेलअप देखने को मिलेगा. आप चाहो तो रेडी हो जाओ सेल करने के लिए, या 41,000 क्रॉस करने के बाद एक बहुत तेज बाउंस आएगा, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है. ठीक है, मतलब दोनों साइड का ट्रेड मैंने आपको बता दिया है. आप उस टाइप से अपने ट्रेड को पंच कर सकते हैं. 41,000 सॉरी, मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दिया. ठीक है, मार्केट 41,500 चल रहा है. अगर 42,000 के ऊपर क्रॉस करता है
तो मार्केट में एक बहुत तेजी आएगी जो 43,000 तक बैंक निफ्टी को लेकर जाएगा। ठीक है, बट अगर मार्केट के अंदर 42,000 को क्रॉस नहीं करता है, उसके आसपास से अगर मार्केट घूमना शुरू कर देता है, तो आप वहां से एक सेल ट्रेड भी पंच कर सकते हैं, जिसमें मार्केट में एक शानदार गिरावट आ सकती है। इसलिए गाइज आप सोच समझ के अपने हिसाब से ट्रेड पंच कीजिए। अगर आप अभी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अभी भी ट्रेड पंच कर सकते हैं, बट 41,700 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर अभी आप सेल करना चाहते हैं तो। अदरवाइज 42,000 के नियर स्टार्टिंग के बाद ही आप सेल करें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। स्थगन एक निश्चित समय के सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, लेकिन वो तय होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन की कार्रवाई आज रात 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट सिने die। अभी आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक शानदार तेजी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बोला भी है कि अगर आपको पुट पोजीशन बनाना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको पुट पोजीशन बनाना है। आप देखिए कितनी तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ ये टर्न अराउंड कर रहा है, और ये 41,600 के भी ऊपर जा चुका है मार्केट। ठीक है, ये लास्टली आपका 42,000 के आसपास तक जाकर ये दम धरेगा। पहला ये 41,700 के आसपास से ये गिरावट लेगी, तो आप वहां से भी सेल कर सकते हैं, या दूसरा 42,000 के बाद बोले तो 41,950 41,900 के आसपास से आप इसमें सेल इनिशिएट कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर है तो अभी शॉर्ट करें, और अगर टेक्निकल ट्रेडर है तो आप वेट करें 41,900 के आसपास का, फिर वहां से आप सेल इनिशिएट कीजिए। अगर आप यहां से भी सेल करेंगे तो आपको एक शानदार प्रॉफिट मिलेगा। देखिए गिरावट शुरू हो चुकी है आपके स्क्रीन पे।
गाइज आपने देखा होगा कि अभी आपने मेरी बात मानकर अगर सेल पोजीशन लिया होगा तो ये आपको टारगेट मिला था 100 रुपए का, बहुत ही जबरदस्त टारगेट था। अभी वापस से सफर तय कर रहा है 41,700 के आसपास। ठीक है, अब आप यहां से भी एक पुट पोजीशन बना सकते हैं, स्टॉप लॉस रखिए 41,800 का, और यहां से फिर से एक डीप खाएगा। ठीक है गाइस, सिंपल है, आप ट्रेड बनाओ 41,700 के आसपास से सेल करो, टारगेट 41,600 और स्टॉप लॉस 41,800। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है आप भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाइए। ठीक है, 700 से 750 के बीच में सेल कीजिए, 800 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट 650 600 का रखिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा आप हमें चैट बॉक्स पे आकर चैट कीजिए।
गाइज आप देख सकते हैं मैंने जो आपको टारगेट दिया था 41,500 का और 42,000 पे सेल, देखिए शानदार प्रॉफिट आपको मिला है। अब इतनी लाइव और इतनी बेहतरीन ट्रेडिंग किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा? कहीं भी नहीं मिलने वाला है गाइज। अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन प्रॉफिट कमाए तो आप लाइव बने रहिए। देखिए कितना शानदार प्रॉफिट मिला है। 41,500 के भी नीचे गया था मार्केट। तकरीबन 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इतना बेहतरीन अर्न करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइव बने रहिए। आज दिन भर बहुत ही जैकपॉट प्रॉफिट होने वाला है बैंक निफ्टी में और इवनिंग में नेचुरल गैस में। तो गाइज आप कंटिन्यू रहें, अब मैं बताऊंगा कि अब अगला स्टेप आपका क्या होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये ट्रेड आपके लिए शानदार था, बट एक हिडन न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा। मार्केट आज लाल निशान में क्रॉस होगा। सोचिए ना, शायद ही कोई इंसान आपको अभी ये बोल रहा हो कि मार्केट लाल निशान में जा सकता है। शायद ये पहला चैनल है पूरे भारत में, न्यूज चैनल अभिराज स्टॉक मार्केट, जो आपको पहले बता रहा है कि मार्केट लाल निशान में जाने वाला है। राइट, देखते हैं अगर लाल निशान में जाता है तो फिर आपको अपडेट करता हूं मैं। ठीक है, फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर 41,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो मार्केट किसी भी वक्त लाल निशान में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि अब जो मार्केट में जो लेवल है वो 41,500 और 42,000 लेवल ही मार्केट को जज करेगा कि मार्केट को ऊपर की तरफ रखना है या नीचे की तरफ। अगर 42,000 क्रॉस करके मार्केट टिकता है 5 मिनट एटलीस्ट, तो मार्केट आज ही के दिन 43,000 क्रॉस कर जाएगा। अगर 41,500 के नीचे जाकर 5 मिनट टिकता है तो मार्केट आज ही 41,000 के नीचे इंपैक्ट लाल निशान में भी मार्केट चला जाएगा। तो गाइस रेडी होते हैं और ट्रेड करते हैं जबरदस्त वाली। और अभी संसद से फिर लाइव होने वाले हैं वित्त मंत्री, और फिर बजट सुनेंगे सब लोग मिलकर, और फिर ट्रेड सेटअप लेंगे कि मार्केट किधर जाएगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके गाइस।
देखिए गाइस कितना शानदार प्रॉफिट आपको मिला होगा, देख रहे हैं आप। सिर्फ इसी चैनल पे आपको बोला गया था कि मार्केट में गिरावट होगी, और देखिए मार्केट में एक शानदार गिरावट हुआ है। तकरीबन स्टार्टिंग से करीब करीब 700 से 800 पॉइंट की शार्प फॉल मार्केट में देखा गया है। ठीक है, तो मार्केट में इतनी शानदार गिरावट और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। और आप चाहते हैं कि और भी बेहतरीन प्रॉफिट कमाए, तो लाइव बने रहिए, बताता हूँ कि फिर अब क्या करना है। फिलहाल अभी शांत बैठिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से लाल निशान की तरफ जाना है। अगर आपको लेना है तो आप 42,500 के टाइट स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हो। टाइट स्टॉप लॉस समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? टाइट स्टॉप लॉस का साथ मतलब क्लियर कट मार्केट लाल निशान में जाएगा, निफ्टी किसी भी वक्त लाल निशान में स्लिप कर जाएगा। सिर्फ अब निफ्टी के अंदर 90 पॉइंट की बढ़त ही रह गई है, और बैंक निफ्टी सिर्फ 600 पॉइंट ही ऊपर है। ओके, बस मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि 41,200 एक सपोर्ट जोन है, मेजर सपोर्ट लेवल है। इसके टूटने के बाद मार्केट 40,500 तक स्लिप कर सकता है, तो शायद यहाँ पे मार्केट रुके। इस कारण से मैं आपको रोक रहा हूँ। आपको जो ट्रेड पंच करना है वो 41,200 के नीचे से स्टॉप लॉस रखना है 41,500 का। एग्रेसिव ट्रेडर है तो मार सकते हैं, ठीक है, बट पेशेंस रख के ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। एग्रेसिव ट्रेडर है तो पंच कीजिए। याद रखिएगा 41,500 दिस इज अ मेजर लेवल, अगर आप पुट के साइड में है तो। ठीक है गाइस, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है चैनल में, आप जाकर वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या चैट बॉक्स पे जाकर चैट में डालिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। और थोड़ी देर में बजट स्टार्ट होगा, तो फिर से हम लाइव मिलते हैं उसमें। तब तक बने रहें, अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा।
गाइस 41,100 का स्टॉप लॉस लगा कर आप इसमें बाई कर सकते हैं। अभी अभी एक सिग्नल मुझे मिल रहा है, एकदम सिंपल ट्रेड आपको यहाँ पंच करना है। 41,100 का स्टॉप लॉस लगा के बाई कीजिए, 41,200 और 41,300, बस इससे ज्यादा का टारगेट मुझे नहीं दिख रहा है। क्लियर गाइस? 41,200, 41,300, 41,100 का स्टॉप लॉस होगा, मुश्किल से 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस है। ठीक है, बस। या ज्यादा अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 41,000 का फाइनल स्टॉप लॉस आप रख के ट्रेड एक पंच कर सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मेजर लेवल टूटा है इसलिए एक बाउंस बनता है। आप देखो, मारो उस ट्रेड को बाउंस में, टारगेट आपका ज्यादा नहीं होगा, 41,300 तक लास्टली। ठीक है, 41,200 और 41,300, ये रहा आपका 41,200 और ये रहा आपका 41,300। ठीक है, यहां से आप बाई इनिशिएट कीजिए फास्ट। मेरे बोलते बोलते 50 पॉइंट चढ़ चुका है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स पे आकर हमसे चैट कीजिए। गाइस मैंने आपको बोला था ना, मार्केट लाल निशान में जाएगा। पहला लाल आपका निफ्टी है, निफ्टी आ गया है, सिर्फ 20 पॉइंट बचा था, 18 पॉइंट 17 पॉइंट सिर्फ निफ्टी बचा था लाल निशान में आने में। सोचिए अगर आप मेरी बात मानकर अगर सेल करते तो कितना अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता। और बैंक निफ्टी भी करीब करीब अपने साढ़े बजट तकरीबन 1,000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी ने भी दिखाया है। ठीक है, तो जबरदस्त ट्रेड था, एक बाउंस बैक अभी प्ले होने वाला है, जिसका ट्रेड मैंने आपको दे रखा है ऑलरेडी, जिसमें आपको 41,000 का स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना है। टारगेट आपका होगा वही 41,200, 41,300, बस खत्म। ठीक है, आप इस ट्रेड के साथ पंच करके ट्रेड एक ले सकते हैं, जिसमें आपको एक हैंडसम प्रॉफिट के रूप में मिल सकता है। ठीक है, फाइनल स्टॉप लॉस आपका 41,000 ही होगा। एक बाउंस बैक प्ले होने दीजिए, देन फिर मार्केट में गिरावट फिर से स्टार्ट होगी। पहला एक बाउंस बैक आपका 41,300 तक जाएगा, उसके बाद एक गिरावट बनना फिर से शुरू होगा। ठीक है, तो इस रैली में चलते हैं 41,300, 41,200 तक। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे कर सकते हैं।
बाई ट्रेड एग्जिट कीजिए, 41,000 टूट चुका है, ठीक है। अब यहाँ से सेल ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 41,200 का, और सेल ट्रेड जो मैंने आपको बोला था कि निफ्टी बैंक निफ्टी सब लाल निशान में जाएगा, वो जाने को तैयार है। निफ्टी आपका किसी भी वक्त लाल निशान में आ जाएगा और बैंक निफ्टी रेडी है लाल निशान में जाने के लिए। जबरदस्त पुट पोजीशन बनाना स्टार्ट कीजिए। गाइज आप देख सकते हैं पूरे भारत में मात्र ये अविराज स्टॉक मार्केट एक ऐसा चैनल है जिसने आपको मार्केट में एकदम क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट आज लाल निशान में जाएगा। जब मार्केट इतना ऊपर था 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और 13-1400 पॉइंट, सॉरी 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 13-1400 पॉइंट बैंक निफ्टी था, वहीं से मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में एक जबरदस्त फॉल होगी। और मार्केट आपने देखा होगा निफ्टी लाल निशान में स्लिप कर गया था अभी कभी, और बैंक निफ्टी भी लाल निशान में स्लिप करने जा रहा था। सोचिए कितनी जबरदस्त ये ट्रेड हुई थी। क्लियर है गाइस? अब स्टार्ट कीजिए एक बाउंस बैक प्लेइंग के लिए। वापस से मार्केट में एक जबरदस्त रैली होने वाली है ऊपर की तरफ, जो अभी जाएगा सडनली 41,500 तक। ये जो रैली आपको दिख रहा है ये 41,500 तक कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये एक जबरदस्त बाउंस बैक प्ले है जिसमें जो भी लोगों ने शॉर्ट्स ट्रेड किए थे वो ट्रैप हुए हैं, और कॉल को जिन्होंने शॉर्ट किया था वो लोग ट्रैप हुए हैं, उसी के बाउंस बैक है। थोड़ा देर इंतजार कीजिए, 40,000 के नीचे अगर वापस से ट्रिप करके 41,000 के नीचे रहता है तो फिर से आप ट्रेड अपना पंच कर सकते हैं।
गाइज संसद में बजट फिर से शुरू हो चुका है। चलते हैं हम लोग लाइव देखने के लिए बजट में क्या हो रहा है, उसके बाद फिर ट्रेड सेटअप पे हम लोग फोकस करेंगे। राइट, चलिए आइए मिलते हैं बजट में। A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax. इसका सीधा प्रसारण आप अब संसद टीवी पर देख पाएंगे। Well, indeed, it's the customary reaction which will come in from the Prime Minister few hours after the budget speech is delivered by the Finance Minister in the lower house and the budget document is placed in the upper house as well. The Prime Minister, shares his thoughts with the nation on the budget which has been presented by his government. So stay tuned. In just a short while, we'll hear from the Prime Minister himself. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। गाइज आपको पता है, लोग ये सोच रहे होंगे ना कि निर्मला सीतारमण जो है हमारे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो सोच रही होंगी कि जब तक हम थे तब तक लोग मार्केट को उठा के रखा हुआ था, और जैसे ही वो लंच वगैरह करने गई, ठीक है, तब सब लोग मिलकर मार्केट को गिरा दिया। समझ गए? और फिर से वो आ रही है तो फिर से मार्केट को लोग अब उठा रहे हैं। सोचिए लोग मार्केट के साथ गेम कैसे कर रहे हैं। जबरदस्त मार्केट में गेम प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आप भी इस बजट में एंजॉय करते रहिए और काफी मजा आने वाला है आपको। ठीक है, कंटिन्यू फॉर वाचिंग। बजट आपके साथ है। हो पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने आप एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं, और इसलिए
विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमई को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमई को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग,
विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। So there it is. You heard the Prime Minister himself summing up the budget, the key focus areas of this year's Union budget targeted at various sectors, various sections of the society as well. And we'll talk about all those sectors and sections throughout the rest of the day as well. Preeti? बिल्कुल। तो 2047 में जो समृद्ध भारत का सपना है, हर तरह से हम समृद्ध हों, हर क्षेत्र में समृद्ध हों और कहीं ना कहीं मजबूत नींव की निर्माण इस बजट ने कर दी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो बात कही, जो संबोधन दिया उसमें कही है और जनहित में कई कदम उठाए गए हैं। जो देश का निर्माण करने वाला छोटा छोटा व्यक्ति है, उनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें मजबूत करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जो इस समय चर्चा में जुड़ रहे हैं। यतीश राजावत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर WTO IIFT, और साथ ही तमाम और मेहमान हैं जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सचिन शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगी। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 का समृद्ध भारत है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है और इस बजट ने कहीं ना कहीं उसके लिए एक नींव तैयार कर दी है। दुनिया भर की, जब मैंने जैसा कहा कि दुनिया भर एक आशा भरी निगाहों से देख रही है, G20 की अध्यक्षता इस समय हमारे पास है और आर्थिक सर्वेक्षण में भी हमने देखा था कि कवर पेज G20 को लेकर ही जारी किया गया था। तो वो जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के लिहाज से किस तरह का बजट? धन्यवाद। अगर इस बजट को हम देखें तो ये अमृतकाल की नींव प्रस्तुत कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो इस बजट में है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये देखेंगे इवन 2003 से पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग किया था और जिसका बेनिफिट कुछ टाइम बाद मिलता है और वो 2003 से लेके लंबे समय तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हाई रही। यही इस बार जो बजट में 10 लाख करोड़ जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाएगा, ये एक नींव रख रहा है जो आगे आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा। इसके साथ साथ अगर आप G20 की हम बात करें तो आप ये भी देखेंगे कि इंडिया ने रिसेंट ईयर में एक लीडरशिप प्रोवाइड की है एट द ग्लोबल लेवल, चाहे वो वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट हो, चाहे फूड क्राइसिस के वक्त हम लोगों ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को और दूसरे कंट्रीज़ को हमने फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया हो। तो ये G20 में भी हमने काफ़ी कंट्रीज़ के नज़रिए से भी हमने बहुत बड़ी लीडरशिप प्रोवाइड की है। इसके साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, फार्मर से लेकर मजदूर, वुमेन, ट्राइबल एरिया, इवन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से लेकर आप देखेंगे कि सभी
सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उन सब का ध्यान रखा गया, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो जहाँ पे कंसेशनल लोन दिया गया है, जो जिस विश्वास से गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस बजट में महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इन्होंने खर्च किया है, इसके बेनिफिट आने वाले टाइम में हम देखेंगे और हमारी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ेगी, स्पेशली जब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी देशों में रिसेशन की स्थिति है जी और आने वाली है, और उस मामले में ये सही होगा कहना कि इंडिया विल बी ए शाइनिंग स्टार अमंग all the nations. Okay. Indeed, those are the key focus areas. Yatish, I'd like to bring you in here, and given by the kind of summary which the Prime Minister presented, and also if you go back to the original approximately 90-minute odd long speech by the Finance Minister, and I'm sure you would have looked through the budget documents also in the meanwhile. Not fully. There can be several monikers which can be, given to the budget. As the Prime Minister also spoke about green, focus on green areas. So green budget, can that be one aspect? People's budget, can that be another aspect? By people, I mean workers, with the Prime Minister also specified about various sections of the society which are in focus, which need to be in focus if the economy has to move ahead for the holistic growth which we always talk about. So, the way I look at it, Vishal, is, he used the word foundation. नींव रखी है अगले 25 साल की. So, what is this foundation? If you look at it from economic terms, there are three parts of the economy largely, the agriculture, manufacturing and services. Now, for manufacturing, the last 2 years we have been giving a very important incentive, which is the PLI. So, this year the focus has been on services and agriculture. On services, if you see, there are two big things the budget does. One is tourism. Now, tourism per se is the largest multiplier for any sector. Every dollar invested in tourism gives $7 of income downstream. Okay. So, and these are all services jobs. Okay. So, they have said that they will attract 50 new destinations. Now, this is not an allocation in that sense, but the way they have structured it is that cities will have to rise up and challenge for this so-called scheme. Second is healthcare. You see the new hospitals, doctors, nursing, these are all new jobs. And healthcare, as we have seen in the last 2 years, is an important area for any developed economy to have. You cannot aspire to be a developed country till such time you have a healthcare which is equivalent to a developed country. Okay. But the other side of it is that healthcare is the only stable long-term employment option at the nurses level, at the caregiver level, and even at the doctor level for for the country. 1/3 of doctors in US, the top hospitals there, are Indians. So, they are now trying to bring healthcare as a priority sector again, services. Similarly, on the agriculture side, there is a shift here, there are elements of the shift. One is the Shri Anna that he promised. Now, this Shri Anna has to be looked in from the prism of 3 layers. One is that millet is a non-fertilizer, non-chemical, organic produce which breaks the water cycle of rice and wheat. And we're further building on our capacity here as well. So we're the largest producers. We are the largest producer of milk. We were the largest consumer of milk. But what has happened over the last 50 years, we have given up this superfood and we have acquired habit of consuming obesity and diabetes inducing food like wheat and rice. Okay. Now, this is again a shift. He's rebranded at Shriyan, which basically gives us an aspiration value. He's classified it as a superfood. Okay, he's not classified as a poor man's food. He's calling it a superfood, and it is a superfood because it has low glycemic content. Okay. Now, these are building blocks in my sense. So the way that till now we were approaching agriculture from a infrastructure and sectoral point of view. Now we are approaching it from a slightly different view, which is produce, revamp the produce, create digital infrastructure, hence the focus on digital public goods there. गाइज आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अब लाल निशान में स्लिप कर गया है। सिर्फ हमारा ही चैनल था जो आपको ये बताया था कि बैंक निफ्टी कभी भी
लाल निशान में स्लिप कर सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने आपको इतनी सटीक प्रोडक्शन प्रोवाइड किया था। अगर आप इस प्रोडक्शन को देखकर अगर आपने ट्रेड किया होता तो बहुत ही अच्छा और शानदार प्रॉफिट आप अर्न करते आज के दिन में। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ अकेला मात्र यही चैनल आपका है अविराज स्टॉक मार्केट, जो आपको लाइव प्रिडिक्शन वो भी गारंटेड प्रॉफिट्स आपको प्रोवाइड करता है। इससे अच्छा और बेहतरीन प्रॉफिट शायद ही आपको कभी मिल सकता है गाइस। चलते हैं, अब देखते हैं कि मार्केट कहां पे सपोर्ट ले रहा है। मार्केट आपका 40,600 का लेवल भी तोड़ दिया है। मार्केट लाल निशान में अभी अभी स्लिप किया था। मेरा जो टारगेट आज दिन भर का था कि मार्केट को लाल निशान में जाना है, वो मैंने अचीव किया और आप बहुत ही हैंड्स ऑन 1300-1400 पॉइंट का प्रॉफिट आप लोगों ने अर्न किया है। और आप यहां से अब अपना प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। जो आपको मैंने बोला था थोड़ा देर पहले एक बाउंस बैक ट्रेड के लिए, देखिए ये भी ट्रेड आपके लिए शानदार प्रॉफिट अर्न किया। और एक ट्रेड जो मैंने आपको यहाँ से सेल इनिशिएशन के लिए बोला था कि आप सेल कीजिए, ये भी आपके लिए एक जबरदस्त ट्रेड साबित हुआ है, जो आपके लिए एक शानदार प्रॉफिट के रूप में दिया है। तो गाइस, इतनी जबरदस्त रिसर्च लाइव मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, वो विद प्रोडक्शन गारंटेड कि आपको मार्केट यहां जाने वाला है और आपको ये चीज पता होगा। तो गाइस, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा हैंडसम प्रॉफिट कमाया होगा। अब दिन के 2:30 हो रहे हैं। देखते हैं मार्केट में कहां और किस प्रकार से सेटअप बनता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूं। आप लाइव चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको लाइव चार्टिंग के थ्रू मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि मार्केट में कहां और किस प्रकार से आप अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं और आप एक हैंडसम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।
देखिए गाइज, आप लोगों ने शानदार प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब मार्केट बंद होने के करीब आ चुका है। हमने आपको बोला था बैंक निफ्टी एक लाल निशान में जाएगा और यहाँ से एक बाउंस बैक करेगा। देखिए ये जबरदस्त बाउंस बैक किया है वहां पर, और आपने जो भी ट्रेड पंच किया है वो आपको बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट मिला होगा। आप देख सकते हो मार्केट किस प्रकार से वर्क किया था। तकरीबन हमारे दिए गए ट्रेड से 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी में एक तरफा फॉल था। आप देखो एक जबरदस्त फॉल बैंक निफ्टी के अंदर हुई है, और आपने एक शानदार प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। आप देख रहे होंगे किस तरीके से इस बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त गिरावट आई थी, ठीक है, और फिर एक यहाँ से एक बाउंस बैक प्ले किया बैंक निफ्टी ने। तो इसी प्रकार से आप बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। लाइव बने रहिएगा। बजट था आज, और लोगों ने कहा भी था कि बजट अच्छा है, बट हमें नहीं लगता है कि बजट अच्छा है। वो तो मार्केट आपको 1 से 2 दिन में बता देगा कि बजट कितना अच्छा था या कितना खराब। आज का ट्रेडिंग में आपने बेहतरीन प्रॉफिट अर्न किए हैं। अब चलते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी तो क्लोज कर दिया है। आपका जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी के पास 40,500 के आसपास आपका बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है। कल का क्या सेटअप होगा आज रात में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अभी चलते हैं हम लोग नेचुरल गैस की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से रिकनेक्ट करें नेचुरल गैस के लिए।